I would say, an interesting analogy between India and China is that most people would know कि Apple Store India में अभी खुला है Yeah. 2023 में. Most people would not remember कि Yes. Apple Store China में 2008 में खुला था. और actually incidentally the Chinese economy grew about 4 times. Actually होता है, हम लोग उसको complicated बनाना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है अच्छा क्या यार SIP करा उससे हो जाएगा, बस इतना करने से हो जाएगा. And this is one of the great things about investing कि आप बहुत सरल चीजें करके Yeah. बहुत अच्छा आउटकम कमा सकते हैं. और एसआईपी की क्या खासियत है? दो तीन चीजें हैं. Yeah. If you want to go eat pizza tomorrow, you can either choose to eat it in a fine dining restaurant where you'll get a nice chef and he'll give you something great, or you can go to Pizza Hut, which is very simple and standardized if you don't want to look through so many restaurants. I think Yes. that is what an index fund is. It is a standardized way to invest. फिर आपको पता है मार्केट का रिटर्न, इंडियन इकोनॉमी का रिटर्न तो मिलेगा ही. मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, चूज करने में, ट्रैक करने में मुझे बेसिक मिल जाएगा. You can, but just like an actively managed quant is not a passive fund. So let me correct that. Passive means you're following an index and there's no involvement of anyone beyond the index. Yeah. Quant is an other kind of active management. Oh, You know, I mean, anyone who's read my book will tell you that building a small AMC in this country is we're effectively a startup, right? Nobody wants to join you. Nobody wants to work with you. The media doesn't want to cover. Nobody cares about you. To be frank, nobody cares about you. So yeah. I always say my first 5 years were about becoming relevant. हाय एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात. म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं एंड वी ट्राई टू गेट समवन विद अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर स्पेस. तो आज हमारे साथ है एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. शी इज मिसेस राधिका गुप्ता, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर of Edelweiss Mutual Fund. She started her career with global giants McKinsey and AQR Capital and then moved to India to start Forefront Capital Management, India's first registered domestic hedge fund. She joined Edelweiss Group after the acquisition of Forefront, scaling up the hedge fund business and also leading to asset management acquisitions, JP Morgan and Ambit Capital. She became the CEO of the mutual fund business in 2017 and is now building Edelweiss AMC into a bold, solution-oriented and customer-obsessed asset manager. Radhika grew up in 4 continents and is a keen storyteller known for The Girl with the Broken Neck, her personal story that crossed 2 lakh YouTube views. Mrs. Radhika Gupta graduated from the Management and Technology program at the University of Pennsylvania with the highest honors and joined degrees in economics from the Wharton School and computer science engineering from the Moore School. Mrs. Radhika Gupta currently serves on the board of Amphi and Young Presidents Organization, Mumbai. She has been named by Economics Times as 40 under 40, by Business Today and Fortune as one of the most powerful women in business and as a top voice for LinkedIn. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात. जैसे आप सब जानते हैं म्यूचुअल फंड्स की बात में ना हम हमेशा वी ट्राई टू गेट समवन विद अ लॉट ऑफ नॉलेज, विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द म्यूचुअल फंड स्पेस. एंड टुडे वी हैव विद अस समवन एक्सट्रीमली स्पेशल, मिस राधिका गुप्ता. शी इज द MD and CEO of Edelweiss Mutual Fund. Hi Radhika, thank you so much for giving us the opportunity to talk to you. I'm sure our investors are going to be super excited to listen to you. Thank you so much for joining us. Hi Namrata, glad to be here and glad to talk to you and all the investors of Groww also. Hi. Hi. So let's get started with the questions, and I think सबसे पहले we'd like to understand your perspective on China. So बहुत सारे लोगों को लगता है कि India is in a sweet spot right now. There's a good amount of focus on manufacturing, setting up of industries, और globally I think China +1 as a policy India की बहुत मदद कर रहा है. लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री एंड द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी विच इज चाइना इज क्लोजिंग डाउन. एंड आपको क्या लगता है कि इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा? यू नो, लॉट ऑफ पीपल आर एंटिसिपेटिंग कि जब अ बिग इकोनॉमी लाइक चाइना इज इम्पैक्टेड, इट इज ओनली द पॉजिटिव. बट कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा? So I think मैं इस स्टेटमेंट को इन पार्ट मानती हूँ. ऑफ कोर्स आई थिंक इंडिया एक ओएसिस सा लग रहा है इस पॉइंट पे दुनिया में. इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 6.5%. पहले जो एक
सिर्फ सर्विसेज ओरिएंटेड इकोनॉमी थी, अब वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड इकोनॉमी है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे टैक्स और पीएलआई जैसे इंसेंटिव हैं, तो ये सारी बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि चाइना एक ऐसी इकोनॉमी है, हम लोग एक चाइना फंड भी चलाते हैं, बहुत लोगों से बात भी करते हैं इस क्षेत्र में, जो बंद हो रही है। दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है, एंड आई वुड से यू डोंट अंडर एस्टिमेट, वेल इट्स वेरी गुड टू सी क्या आपके यहाँ अच्छी चीजें क्या हो रही हैं, आप दूसरों को भी अंडर एस्टिमेट मत करो। आई थिंक चाइना इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमी एंड इन देयर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर इंस्टेंस। एंड मुझे लगता है चाइना शायद इंडिया से 10-15 साल अपने एवोल्यूशन में आगे है। जो मैन्युफैक्चरिंग बूम शायद इंडिया में आज की तारीख में हो रहा है, वो चाइना में 2000 में हुआ था, 2006-7 में हुआ था। जो यहाँ एक्सपोर्ट की एक इंथुजियाज्म है, वो वहाँ शायद 2007-8 में हुई थी। तो आई थिंक चाइना इज एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। फॉर इंस्टेंस, दे नो लॉन्गर वांट टू बी अ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, they want to move up the curve. So just because a market has gone through volatility doesn't mean that the market is over. I would say, an interesting analogy between India and China is that most people would know कि Apple Store India में अभी खुला है 2023 में। Most people would not remember कि Apple Store China में 2008 में खुला था, और actually incidentally the Chinese economy grew about 4 times since then. But what is more interesting is कि उस टाइम चाइना का जीडीपी पर कैपिटा $2,500 था, जो कि इंडिया का अब है। तो हम शायद एक वैसी जर्नी देख रहे हैं 15 साल पीछे। Okay, okay. So which means we have a lot to catch up, but we are still in a sweet spot at this point. Sure. Okay. So recently Fitch ratings ने जो है US के sovereign rating को downgrade किया है. So in your opinion, ये downgrade की वजह से do you think India में FII inflows बढ़ेंगे, या in any other emerging market for that matter? And क्योंकि country का risk चला ऊपर गया है, do you think that will be compensated with better returns in equity market because of the country premium risk? I think the answers are not so simple. हम क्या करते हैं, एक डाउनग्रेड देखते हैं यूएस मार्केट में और कहते हैं अच्छा यहाँ पैसा नहीं जाएगा, इंडिया में जाएगा। आई थिंक द आंसर्स एंड द नैरेटिव आर नॉट सो सिंपलिस्टिक। आमतौर से, और हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर्स से बात करते हैं, जब वो पैसे एलोकेट करते हैं तो वो हर कंट्री को इंडिपेंडेंटली देखते हैं। यूएस और डेवलप्ड मार्केट्स को अलग तरीके से देखते हैं, इंडिया को और चाइना को देखते हैं अलग। मैं एफआईआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के बारे में ये कहूंगी कि एक टाइम था जब लोग कहते थे चलो इंडिया को एलोकेट करना है तो कर सकते हैं, चाइना भी है। नाउ इंडिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर एट द सेंटर ऑफ एक्शन। इट इज ऑलमोस्ट बिकमिंग, I think Japanese president said this in G7, indispensable. So India allocation is coming to the forefront, not because of Fitch, not because it is replacing US allocation, because if you want to deploy, अगर आप बड़ा पैसा एक इमर्जिंग मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं, तो आज की तारीख में आप 2 ही जगह कर सकते हैं, इंडिया और चाइना। दूसरा, हमने एक बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक पीरियड जहां जो टॉप डाउन हमारा नैरेटिव है और जो बॉटम अप हमारी कंपनीज चाहती हैं, उनका एक बहुत अच्छा मिश्रण हो रहा है। तो ये लोगों को दिख रहा है, हमारी हेल्थ ऑफ मार्केट्स दिख रही है। तो आई थिंक इंडिया इज बिकमिंग अ मोर डिजायरेबल मार्केट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। लेकिन जो एफआईआई एलोकेशन है ना, वो एक बहुत नुआंस चीज है, तो इतना सिंपलिस्टिक नहीं है कि यहाँ डाउनग्रेड हो गया चलो इंडिया को और पैसे। ओके ओके, fair enough. So I mean, so we do see कि शायद India में we would expect decent FI inflows coming in. All right, okay. So now let's quickly talk about some categories of funds, and I'm going to start off with a very interesting category, which is small cap. In the recent past, काफी investors ने, काफी young investors ने small cap as a category को बहुत they like small cap as a category, and of course they've got very good returns as well, right? I mean, small cap ने जो है बहुत अच्छे returns भी दिए हैं, and we have seen a lot of inflows coming in the last 6 months. होल्डिंग अगर हम लंबे पीरियड के लिए इन फंड्स को देखें तो ये अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो जो स्मॉल कैप फंड्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं 3 पीसेस ऑफ एडवाइस देना चाहूंगी। एक तो जब आप निवेश करते हैं, एंड आई एम वेरी बुलिश अबाउट स्मॉल कैप एज अ सेगमेंट, वी रन अ स्मॉल कैप फंड, वी केप्ट इट ओपन, very bullish about this part of the economy for many reasons, because I truly believe कि आज की तारीख में जो हमारे लार्ज कैप्स है ना, वो एक्चुअली मेगा कैप्स हो गए हैं। जो हमारे मिड कैप्स हैं वो
लार्ज कैप्स हो गए हैं, तो स्मॉल कैप इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस। मैं सिर्फ 3 बातें कहना चाहूंगी। पहली तो ये कि अगर आप निवेश कर रहे हैं स्मॉल कैप में, तो आप अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन सही रखिए। आमतौर से हम देखते हैं इन्वेस्टर्स कमिंग टू स्मॉल कैप लुकिंग एट लास्ट 1 year रिटर्न एंड दे गेट वेरी डिसअपॉइंटेड। लास्ट 1 year रिटर्न इज नॉट एन इंडिकेशन। तो मुझे लोग आजकल कहते हैं स्मॉल कैप रिटर्न 40% देंगे, 50% देंगे, मुझे बहुत डर लगता है ऐसी बातों से। तो पिछले 1 साल का रिटर्न मत देखिए। दूसरी बात, स्मॉल कैप एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, लेकिन जैसे कि आपने कहा एक बहुत वॉलेटाइल कैटेगरी है। तो अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से देखिए। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जैसे मैं अभी एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर से बात कर रही थी, तो उनके पोर्टफोलियो ने कुछ 12-12.5% एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है 5-6 सालों में। लेकिन उनको किसी ने कहा कि स्मॉल कैप ने इतने सारे पैसे बनाए, तो उन्होंने कहा मैं सब स्मॉल कैप में स्विच कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, चाहे स्मॉल कैप ने कितना भी अच्छा रिटर्न दिया, आपकी नीड्स के हिसाब से, आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। तो प्लीज उसको मत भूलिए, क्योंकि ऑफन अच्छे बाजार में हम ये भूल जाते हैं। और तीसरी जो आपने बहुत जरूरी बात की कि स्मॉल कैप में अगर आप निवेश करिए, तो कम से कम 7 से 10 साल के उसके लिए निवेश करिए। 2 से 3-4 साल के लिए आप प्लीज स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत करिए। So a long-term time horizon for sure makes a big difference. Yes. Okay. So Radhika, just last year you started SIPs in your son's name. Congratulations on your little one. So आप एक नए newbie investor who's just starting his investments in mutual funds, आप उनको क्या advice देंगे related to SIPs? Like so many people talk about SIPs. हर कोई बोलता है कि आप SIP के जरिए invest करिए and आपको wealth creation में बहुत मदद होगी. So I just want to ask you, क्या wealth creation really इतना simple होता है कि हम SIP के जरिए invest करें and we are sorted? एक्चुअली होता है, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है अच्छा क्या यार SIP करा उससे हो जाएगा, बस इतना करने से हो जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स अबाउट इन्वेस्टिंग, कि आप बहुत सरल चीजें करके बहुत अच्छा आउटकम कमा सकते हैं। और SIP की क्या खासियत है, 2-3 चीजें हैं। एक तो SIP ना, बहुत सारी हम वर्ड्स यूज करते हैं, वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग, ऑल ऑफ दैट। SIP इज अ ग्रेट वे टू पुट मनी असाइड। जो पैसा साइड करने का काम है ना, कि मैंने इतना कमाया, चलो ऑटोमेटिकली साइड में हो गया, सेव हो गया, इन्वेस्ट हो गया। तो एक तो SIP एक बहुत ऑटोमेटिक चीज है। दूसरा, SIP जो आप नए निवेशक की बात कर रहे हैं, वो बहुत छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। तो स्मॉल इन्वेस्टर्स ऑल्सो स्ट्रगल विद हाउ डू आई स्टार्ट, डू आई हैव इनफ मनी टू स्टार्ट। SIP is truly the power of small things। मैंने लोगों को देखा है छोटी छोटी SIP की किश्तें करके घर खरीदते हुए, बेटी की शादी करते हुए, पढ़ाई का वो करते हुए। तो ये छोटी छोटी जो रेगुलर हैबिट है, इससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। SIP इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। तीसरा, आप SIP बहुत अलग अलग फंड्स में कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक फ्लेक्सी कैप फंड में SIP करना है। लाइक मैंने अपने सन की 3 SIP शुरू की है। मैंने एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में, इंडेक्स फंड में SIP की है हमारे, क्योंकि मुझे ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी का एक्सपोजर देना है। मैंने एक एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड में SIP की है, क्योंकि उसका लंबे समय का 18 साल का होराइजन है, मैंने उसमें की है। मैंने एक इंटरनेशनल फंड में SIP की है, और इस SIP के जरिए मेरी उम्मीद है कि मैंने उसका कॉलेज एजुकेशन पोर्टफोलियो बनाया है। तो नए निवेशकों को जब SIP समझ आएगा, तो वो शुरुआत करने का बहुत अच्छा तरीका है। Yeah. No, I'm completely with you on this. Rather, I started my SIPs when I was 18, and I could manage my international MBA with that. So my अरे वाह। investment. Yeah. So it was a pretty big achievement for me in itself. Yeah. Okay. So now since you were talking about index funds and you said कि आपने अपने बेटे के लिए एक index fund में invest किया, I think let's talk a little bit about that. So सबसे पहले आप ये बताइए कि जो passive funds होते हैं in general, and especially index funds, what kind of investors should look at index funds? जो first time investors होते हैं, क्या वो index funds में invest कर सकते हैं? And क्या इन investments को भी हमें long term के लिए hold करना चाहिए? And how much allocation should an index fund have in my portfolio? So it is a very good question, and before I answer this, I must say कि मैं कुछ अपने बेटे के बारे में कहती हूँ कि मैंने पैसिव में इन्वेस्ट किया, तो लोग कहते हैं अच्छा ये MC की CEO जा रही है, वो सिर्फ पैसिव करती है बेटे के लिए। एक्चुअली आई डोंट बिलीव दिस होल एक्टिव वर्सेस पैसिव थिंग। आई थिंक पैसिव फंड्स एक जरिया है निवेश करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, और एक्टिव फंड्स एक जरिया है। बट पैसिव फंड्स आर वेरी,
It's not about passive outperforming active and all of that. Yeah. You know, if you want to go eat pizza tomorrow, you can either choose to eat it in a fine dining restaurant where you'll get a nice chef and he'll give you something great, or you can go to Pizza Hut, which is very simple and standardized if you don't want to look through so many restaurants. I think Yes. that is what an index fund is. It is a standardized way to invest. फिर आपको पता है मार्केट का रिटर्न, इंडियन इकोनॉमी का रिटर्न तो मिलेगा ही, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, चूज करने में, ट्रैक करने में मुझे बेसिक मिल जाएगा, एंड दैट आंसर इज वेरी गुड फॉर एवरीवन. However, I'm so glad you brought up this point कि इसमें रिस्क होती है या नहीं. अगर आप पिज्जा खाते हैं, चाहे आप पिज्जा हट का खाएं या इटालियन रेस्टोरेंट का खाएं, कैलोरीज दोनों में होती हैं. तो अगर आप इक्विटी में निवेश करें, इफ यू बाय स्मॉल कैप्स फॉर इंस्टेंस, वेदर बाय इंडेक्स फंड और इक्विटी फंड, उतना रिस्क दोनों में होता है. रिस्क स्मॉल कैप का होता है, एक्टिव फंड में ये एक एडिशनल रिस्क होता है कि फंड मैनेजर अच्छा करेगा या नहीं. पैसिव फंड में वो रिस्क नहीं होता, लेकिन जो मेन रिस्क है अनहेल्थी होने का या रिस्क होने का, वो दोनों चीजों में होता है. तो आप उसको इस हिसाब से देखिए. इंडेक्स फंड इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट. आई पिक लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड फॉर माई सन फॉर द लॉजिक कि वो 18 साल के लिए निवेश करना है. अब मुझे पता नहीं है उस पीरियड में लार्ज कैप्स अच्छा करेंगे, फ्लेक्सी कैप्स करेंगे, लार्ज एंड मिड कैप्स करेंगे, तो मैंने कहा मैं इंडेक्स फंड कर लेती हूँ. बाय द वे, मैंने उसी लड़की के लिए स्मॉल कैप में एक्टिव फंड पिक किया, क्योंकि मुझे लगता है उस कैटेगरी में तो शायद एक्टिव मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी करेगी. तो आइदर और भी नहीं होता. ओके, बट देन एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर कितना एलोकेशन होना चाहिए मेरे पोर्टफोलियो का टू एन इंडेक्स फंड? द क्वेश्चन वाज कितना एलोकेशन होना चाहिए ना इंडेक्स फंड्स में. आई थिंक whether you allocate to index funds or active funds doesn't matter. आपको उस तरह से नहीं देखना चाहिए. आपको allocation देखना चाहिए asset class wise. मैंने gold में कितना allocate किया, मैंने large cap में कितना किया, मैंने small cap में कितना किया, मैंने debt में कितना किया. जब आपने वो asset classes चुन ली है, तब आप डिसाइड करिए कि अच्छा डेट का मुझे ना बॉन्ड से करना है, एफडी से करना है, लार्ज कैप का मुझे इंडेक्स फंड से करना है, स्मॉल कैप का मुझे एक्टिव फंड से करना है. तो इट्स लाइक you decide now. Again, back to our diet example, how much Chinese, Italian and dal chawal I want to eat. Now dal chawal you want to eat homemade, and Chinese you want to eat from delivery, that you then choose later. That is a secondary decision. Asset allocation जो है वो पहला decision है. Yeah, fair enough. I mean, I think I completely buy that point. कि मान लो आपको एक large cap index fund में invest करना है, active fund में you can choose what works better for you in that sense. Okay, fair enough. ओके, सो जनरली अगर हम बोलते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, आई थिंक दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग विच ऑल ऑफ अस हैव. तो यू थिंक कैन वी जस्ट अज्यूम कि ये फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, या फिर हमें अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए? बिकॉज अगर हम अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देखें तो इज रीबैलेंसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो. And could you also tell us कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे रीबैलेंस करती हैं? I'm sure a lot of our investors would like to know about it. And just another question around it is कि how frequently should I rebalance? Also, अगर मान लीजिए एक फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, then is it a good time to exit? So this is a very good question, very nuanced question, and I think the answer has to be a little balanced in life. See, you don't want to be that person जिसने invest किया और 10 साल तक कुछ नहीं देखा. Okay, and you don't want to be the person who's rebalancing every month and quarter, because that is not healthy. And everyone finds their own comfort. Also, one has to remember that the mind really wants to make changes, but remember there are things like exit loads, there are tax. So, in my own portfolio, sometimes when I have an underperforming fund, my husband will tell me, you want to exit it? Is your desire to exit greater than the capital gains tax you have to pay? So all these things are very practical. Now, and I want to separate rebalancing from reviewing. Okay. In my own portfolio, for instance, I have got a document me and my husband make about what we want with our money. उसमें हमने अपने principles सब लिख लिए हैं. Actually, it's a great thing to write because, whenever you make a mistake, then you can refer back to it and not blame each other or blame yourself. So we have that. We review our portfolio once a quarter. तो once a quarter मैं बैठ के देखती हूँ कि ये मेरे holdings हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है. I actually don't do very large rebalancing. जो structural rebalancing है, more than every 3-4 years. तो 3-4 साल बाद मैं क्या करती हूँ, मैं अपने सारे फंड्स evaluate करती हूँ, because मुझे लगता है आपका फंड अगर अंडर परफॉर्म भी कर रहा है तो आपको उस मैनेजर को वक्त देना चाहिए.
unless कोई fraud ward हुआ, which in our segment I'm investing in mutual funds. That doesn't happen. So Yeah. I look at three things every 3-4 years. And the other thing I look at when I rebalance is मेरा asset allocation change करना है, क्योंकि मेरी lifestyle needs change हो गई है. मुझे घर खरीदना है, मेरे बच्चे के लिए मुझे कुछ सेव करना है. आपकी लाइफ में भी चेंजेस होते हैं which define your goals. मेरा जॉब चेंज हो गया है क्या, जिससे मेरी रिस्क एपेटाइट. Another thing I look for in rebalancing, for instance, is मैं SIPs करती हूँ. My income has grown, but have my SIPs grown? A lot of people make this mistake of not growing their SIPs with their income, and then they realize they're just accumulating a lot of cash. So these are the kind of things. But I think once in every 3-4 years, you can look at a major rebalance. छोटे मोटे rebalances आप करते रह सकते हैं, but I like the 80-20 rule. 80% of your portfolio should be truly long term. You shouldn't do anything with it. Otherwise, you're paying unnecessarily paying tax and losing compounding. Market timing has actually cost more people money than choosing bad funds. 20% if you want to do tactical rebalance, ये आ गया, वो आ गया, ये opportunity है, वो आप कर लीजिए. Once in every 3-4 years, I think you should have a really hard look. Okay. Because what we've realized is कि बहुत सारे लोग 1-2 साल का रिटर्न्स देखते हैं, अच्छा नहीं कर रहा है तो फंड से एग्जिट कर देते हैं, राइट? एंड And दैट I have had funds which are not doing well. Because I invest even outside Edelweiss. I've had funds that are not doing well. I look at them, I get very frustrated. Fund अच्छा नहीं कर रहा. And then I just decide to calm down and stop looking at it. And I'm telling you, over the last 5-7 years of investing in funds, even funds that were doing terribly, now if I give them enough time, they do fine. Yeah. Very As long few. as you're sure कि The आपने worst पहले अच्छे the worst performing mutual fund, I did this math, the worst performing equity fund has done better than an FD. So really, by holding on, you can't do that badly. Yeah, as long as you've not made a fundamental mistake in selecting a fund for yourself. Correct. Yeah, then it's okay. All right. Okay. So, also I think another question which a lot of our investors have is, हमने बोला है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, दे मस्ट रिस्ट्रिक्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स टू अ फ्यू ब्रॉड म्यूचुअल फंड कैटेगरी, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे. सो आप म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में क्या अप्रोच फॉलो करते हैं? लाइक व्यूअर्स वुड लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और उसमें हमें क्या क्या कैटेगरीज डालनी चाहिए? This is a great question because, otherwise what happens is, and I come from the industry with so many AMCs, so many schemes, so many NFOs, you'll go crazy, right? And I Yeah. always again give the food analogy that a job of a restaurant owner is to launch a restaurant, right? Now, Bombay probably has, or Delhi or Bangalore, thousands of restaurants, but if you go eating at all of them just because they're opening, you'll have indigestion, right? So Yeah. you have to choose a few things that work for you. So if I go back to your 80% core portfolio, I think for most people, 5-6 categories of mutual funds solve the job. Everything else can be done in that 20%, but in that 80%, मुझे लगता है 5-6 category में काम हो जाता है. I'll give you a few categories I like. Yes. Balanced advantage or one aggressive hybrid category is fantastic for conservative investors, so I use it very aggressively. Another category I like is either a large and mid cap index fund or a multi cap fund or a flexi cap fund. One of these all cap kind of funds. I don't love large cap funds, pure play large cap funds. So ये दो category हो गई. I love mid cap funds and I love small cap funds. So I think between these four, if you are an evolved investor, you can add one international fund. ये 5-6 कैटेगरी से ज्यादा शॉर्ट टर्म कंटिजेंसी पार्किंग के लिए आप लिक्विड फंड, आर्बिट्राज फंड, एक ऐसा फंड, 5-6 फंड कैटेगरी, 2 फंड्स इन ईच कैटेगरी, 8 से 12 फंड्स में मोस्ट पीपल कैन बिल्ड अ पोर्टफोलियो. Okay. But you recommend small cap funds as a part of your core portfolio? I do. I think a core portfolio, there are two ways to construct it. If you're a more aggressive investor, you can have either some large and mid exposure plus mid and small exposure, mid and small. If you're conservative like me, I have BAF and I supplement it with SIPs in mid cap and small cap. Okay. See, you need broad-based exposure to the Indian economy because the reality is you will see tremendous growth in mid and small cap. So you can't run away from that. Yes. Okay. No, I know कि आप हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपने बोला था कि स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी समथिंग दैट्स योर फेवरेट, लेकिन जनरली ये अजम्पशन रहता है कि वो रिस्की कैटेगरी है तो उसको थोड़ा सैटेलाइट पोर्टफोलियो में डाल देते हैं. Most people assume that we'll put small caps in a satellite portfolio, and that's why I asked you this question
should it be a part of the core portfolio of an individual, जो 80%? I think it should be because these are satellite ideas to me are tactical ideas, Yeah. sectoral funds, exotic ideas, things you don't want to really hold for the long term, things you're kind of doing to entertain yourself. Those are small. I don't think small cap is a satellite idea. All right. Okay. Fair enough. All right. Now we have a strong set of reasons to believe कि equity mutual funds में invest करना चाहिए instead of direct stocks. Now, Yes. stock या sector selection obviously बहुत मुश्किल होता है और हर कोई वो नहीं कर पाता है, and that's why we have mutual funds that facilitate this process of helping us. लेकिन अगर हम fixed income instruments की बात करें, then should I invest through a fund manager? Right? So can you give us reasons to understand कि हमें debt funds में क्यों invest करना चाहिए versus maybe a fixed deposit? एक डेट फंड के एफडी के कंपैरिजन में क्या वैल्यू ऐड होते हैं विच विल हेल्प मी अंडरस्टैंड कि मुझे डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना है. So many people know me because of my love for debt funds, for Bharat Bond, target maturity funds, and I also know a tax change has happened, and people keep asking this question: why debt funds despite FD? I think there are a few reasons. One is debt funds offer you something very nice called liquidity. When you book an FD today, you don't have liquidity, and liquidity is very valuable. In fact, the reason I do fixed income, if I do any fixed income, would be liquidity. Second is debt funds give you tremendous variety. So like target maturity funds, you have products all the way till 2037, right? So you get tremendous range. Today I can't go book a 15-year FD, and when rates are high, you can do that. Third, something very few people realize, for those of us who pay tax, and I do, and I don't like paying tax, and I'm sure most of you don't like paying tax. In FD, when you get interest, you pay tax every year. Yeah. In debt funds, you pay tax at the very end, तो आपकी compounding बढ़ती है. तो actually, I think debt funds को लोग समझते नहीं हैं, लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे features हैं जो बहुत अच्छे हैं. Of course, आप compare करिए अपनी needs के हिसाब से, but there are a lot of good things debt funds have to offer. Yeah. नहीं, because I think अभी जब taxation change हुआ तो लोग का mindset एकदम से change हो गया है. पहले of course we had a big this thing कि long term capital gains taxation was amazing and we would invest in a debt fund. लेकिन अभी क्योंकि अब there's no tax benefit, we're like हाँ ठीक है, तो अब FD में करो या debt fund में करो, maybe not that much of a difference, but I think you're absolutely right कि और बहुत सारे reasons हैं why we should be looking at debt funds and not necessarily fixed deposits. Absolutely. Okay, so I think बहुत सारे लोग ना equity funds में returns को chase करते हैं, which is of course a given, लेकिन they're always fearful of losing money as well. Yes. आपने एक बार बोला था know the value of enough and never take a shortcut to earn money. So आपको what advice would you give to such investors जो returns को chase करते हैं in equity funds? It's a dangerous thing that gives you a lot of. So I always say the worst single statistic that people worry about is the last 1 year returns. And I have seen in this industry, I almost know if a fund is going to top the charts in 1 year, I'm going to get a lot of money in it the next month. And I think if you're chasing 1 year returns, I just want to break down to you in very simple terms what you're chasing. Last 1 year return kya hai? It is the return, we're in August, that someone investing last August made if he invested from then till today. How does it define what you will make in the future? In fact, and I like to go back to data for most things. In fact, last 1 year return is an indication of perhaps the opposite that could happen. So I would just tell you that, the chase for returns is not grounded in any kind of logic or history. It's a very tempting thing to do. But it's really a horse race. The second thing I would tell you is that I truly believe, and this is a philosophical statement and I may sound old, investing is not a horse race. It's not about Namrata earned 15% return and Radhika earned 16% return. Because when you make it a horse race, now you lead to FOMO. Oh, Namrata is buying Bitcoin. Oh, I should buy Bitcoin. Even though it's not good for me, but I should go buy Bitcoin because Namrata is buying Bitcoin and she said she made so much money. Investing is personal. It's about what is right for you. It's about the goals that make sense for you. It's about the risk appetite that makes sense for you. Look, I work in the capital markets and I'm one of the most conservative investors you will see because I work in a very risky profession. So, investing is a lot more personal and it's meant to fulfill goals and purposes. So I would highly encourage you, instead of chasing returns, chase goals, chase purpose.
Yeah. Finally, you can't live in an NAV. No, I love NAVs, but you can't live in an NAV. Absolutely. No, I mean, it is true that, we need to chase goals. And as long as आपका goal achieve हो रहा है, that is what you should be looking at and not Correct. just, Like life is not lived by beating the benchmark every day and saying, today I beat the Nifty by 1%. The purpose of money is to improve your life. absolutely. Fair enough. Okay. So I think now I'm going to ask you a very interesting category, जिसका interest levels इस category में काफी बड़ा है investors का. And this is the quant funds that we're talking about. Of course, काफी unexploited है इंडिया में. But ये जो क्वांट फंड्स होते हैं, व्हाट आर दीज फंड्स, और ये एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिटर्न फ्रेमवर्क, आप इन फंड्स को कहाँ पे पोजीशन करेंगे वर्सेस एक्टिव एंड पैसिव फंड्स? Okay, so I started my career as a quant, and this whole Yes. space is very close to me. But unfortunately, I think there are lots of myths about this category. Firstly, quant is not a category of funds; it is a way to invest. Just like what is quant? So in traditional fundamental investing, investors, fund managers are talking to companies, looking at data, and making decisions. In quant funds, models are making decisions, right? Yes. Both approaches are valid, but both approaches need good managers. So quant needs good managers who have seen cycles. Fundamental investing needs good managers who've seen cycles. Within quant also many different things can happen. So I can make quant models basis momentum. I can make them basis value. I can make them base this 10 other things. So I think before deciding whether to invest in a quant fund or evaluate it, you need to do hard research about what the fund is doing, whether it has the ability to do that, whether it can tide through cycles. The word quant is not a magical word. For instance, we run our own large cap fund and our balanced advantage fund using quant processes. We've been doing it for Mhm. 13 years. We have a dedicated team that does that, but we don't label it in this little category called quant fund. We believe quant is a style of investing. It's not, it's not a category. It's not pharma. It's not healthcare. So that's my take. But then can I compare it to active and passive as a You can. You can, but just like an actively managed quant is not a passive fund. So let me correct that. Passive means you're following an index and there's no involvement of anyone beyond the index. Yeah. Quant is an other kind of active management. Okay. Okay. So which means, can I have a quant fund in my portfolio, or should I You have a can, quant but fund? you should apply the same principles that you do when you have active management, which is the fund manager and the team running quant should be highly capable. They should have seen cycles, all of that stuff. And what the quant fund is doing, just like in an active fund, you can have a value fund or a growth fund. In a quant fund, you can have a momentum quant or a value quant. Okay, fair enough. Okay. ओके सो आई थिंक अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो काफ़ी एएमसीज ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स को लॉन्च किया है हाँ, एंड जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं ना, दे आई एम श्योर वी टेन टू गेट कंफ्यूज कि हम मल्टी कैप में इन्वेस्ट करें या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करें, बिकॉज इफेक्टिवली इन बोथ द कैटेगरीज हमारा पैसा लार्ज मिड और स्मॉल तीनों में जाएगा. So should a first time investor look at multi cap funds as a category, and considering ये funds जो हैं mid cap और small cap category में 50% तक हमेशा रहते हैं, what would be the ideal investment horizon for a category like this? So I like the multi-cap category. In fact, pending regulatory approval, whenever it happens, we will launch a fund in this category. So I like the category. The reason I like the category is the fundamental construct. Multi-cap is a very simple category. It's again one of those thali categories. Like it has the right amount of rice, dal, and sabzi in it. Yeah. You have 25% safety of large caps, you have 50% mid and small caps. I think for an economy like India, where you will see broad-based growth, this exposure to minimum 50% mid and small cap is very powerful. So I really like the category. I think it works for first-time investors if they have a 5-year plus horizon. It is a little riskier than flexi cap funds because if you look at a flexi cap fund, it's about 70% large cap on average. Large and mid cap fund is also more conservative. Multi-cap fund will have a little more risk, but I think that structure is very nice. Okay. But then if I have to pick between a flexi cap and multi cap, which one should I pick ideally? If you honestly had to ask me, I would pick multi-cap over flexi-cap today. Okay, today. And this could change depending It on. could change, but I think for the, and look, for the conservative investor, see, all these answers are, subject to risk appetite. In general, I like the structure of a Okay. multi-cap. So which means you can confidently say कि अगर आपने एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट किया, आप उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखेंगे. बिल्कुल. Okay, all right. Okay.
Um, so now I think we're going to talk about an interesting category called the ELSS funds, जिसमें Mm-hmm. हमेशा excitement रहा है, लेकिन all thanks to the new tax regime, we have many investors who've lost their faith in ELSS funds. पहले हम इन्वेस्ट करते थे कि ऑफ कोर्स टैक्स डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अब वो नहीं है अगर आप न्यू टैक्स regime को फॉलो कर रहे हैं. With a 3-year lock-in, do you think an investor would want to continue to invest in ELSS funds? And with around 57% of the ELSS funds failing to beat the benchmark, in over the last 3 years, आप ELSS funds के investors को क्या बोलना चाहेंगे? So look, if you're in the old tax regime, then you'll take a call basis tax. But if you're in the new tax regime, obviously now you have to evaluate the ELSS fund without its associated tax benefits, Exactly. which means you evaluate it under compared to every other fund. An ELSS fund typically has a structure similar to a flexi, large and mid, or multi-cap fund, and you decide. Now, if there is an outstanding ELSS fund without the tax, which just does a wonderful job of managing money, and you're happy to lock in for 3 years, you should. Obviously, most people would prefer, if they're not getting the tax benefit, to have the option of liquidity. Yeah, yeah. I mean, like you said, like आपके लिए liquidity बहुत important है. मेरे And लिए है. yeah, Anytime I believe that if in any scenario I am locking my money into something, I should get substantially more to do that. so you should get that extra Premium. benefit, premium. Yes, that I should get some कुछ मुझे करना चाहिए, नहीं तो मैं लॉक क्यों करूं भाई? Absolutely, yeah. So I think Radhika, one wonderful achievement from your end is कि आपके leadership के under Edelweiss AMC का जो AUM है वो 6,000 crore in 2017 से it has grown to almost 1 lakh crore in Feb 2023. So I'm sure you've had a lot of learnings in the last few years. So please tell us a little bit about your learnings in equity markets, and also tell us कि as the youngest CEO in the mutual fund industry आपने क्या challenges या क्या successes face किए हैं, and आपने इंडिया के बाहर भी काम किया है, so give us a little perspective in that aspect as well. So firstly, I do want to thank you, Groww, and all the investors listening in, anyone who supported us. A journey from 6,000 to now actually 1.1 lakh odd crores is only made possible because that many people trust us. And a lot of people ask me the AUM is a large number. And I say, we never see the AUM. We see the fact that so many people trust us with that kind of money. And it's a big responsibility to live up to. So that's that. There can be lots of learnings, but if I have to sum it into one, my learning in building an asset management business is कि अगर आप अपने कस्टमर के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसको सच्चाई से बता रहे हो कि आप क्या करना चाहते हो और वही कर रहे हो, तो आप अच्छे से काम करोगे. एंड द ग्रेट थिंग अबाउट इंडियन एसेट मैनेजमेंट टुडे इज व्हेन आई जॉइंड, लोग कहते थे अगर आपका कोई बड़ा बैंक अफिलिएशन है, नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता. The reality is because of platforms like yours and many others, if you have a good product, if you have a good story, investors will trust you and give you money. So I think just relentlessly focusing on your customer is the number one lesson I've learned. Friend, as far as being a young person, I think India and financial services has not historically been a domain of young leaders, unlike industries like tech, etc. But India is also a country where I think the traditional barriers are going away. So, being from a small town, being young, being a woman, I think all of this stuff, doesn't matter as much as we think. The glass ceilings are often in our heads. And so having a certain amount of ambition, having a certain amount of resilience, and being able to take a certain amount of risk, I think these are important things and they can get you very far in today's India. It's a lot more meritocratic. AMC industry and India is a lot more meritocratic today. By the way, some of these principles apply to equity investing the most. Having a balanced head on your shoulder, being resilient through market corrections, knowing what you want, doing what is right for you, the same principles apply to equity investing as well. Yeah. But any specific challenges that you faced? Anyone who's read my book will tell you that building a small AMC in this country is we're effectively a startup, right? Nobody wants to join you. Nobody wants to work with you. The media doesn't want to cover. Nobody cares about you. To be frank, nobody cares about you. So I always say my first 5 years were about becoming relevant, so that you're almost being like, मैं भी हूँ, please listen to me, please look at me, please work with me. People will tell you, आपके फंड इतने छोटे हैं, मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा. Then you'll be like,
आप नहीं इन्वेस्ट करोगे तो मेरे फंड कैसे बड़े होंगे? So you have Yeah. all kinds of chat. I remember people won't come for an interview, but as I said, I think time and self confidence changes all these things. Yeah, yeah. And I think, you're being modest, but I know that you've obviously played a very, very big role in getting your AMC to this level for sure. Yeah. Okay. So Radhika, बहुत सारे जो investors होते हैं, they're very afraid to invest in equity funds. हमें पता है कि people will tell you कि मैं equity में क्यों invest करूँ, इतना risk है and all of that. So आप हमारे investors को ये बताइए कि equity as an asset class क्यों important होता है, and not just from a first time investor's point of view, but also from a retired investor's point of view, right? And if they want to manage their risk, how should they do it? So equity is inevitable. It's really indispensable because अगर आप आज की तारीख में देखें, अगर आप सिर्फ फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करेंगे, you get 7-8% post tax 5%, आपकी महंगाई 5% है. Your capital is not going to grow post expenses. So you are actually depleting capital. हर आदमी को पता है कि अगर मैं, like I have a hairbrush in front of me here, if I were to buy this hairbrush in 1970, I'd probably pay a rupee for it. I can't buy this hairbrush for a rupee, and this is true of anything else. This is true of your price of bread. This is true of your price of a phone. This is true of anything. तो inflation, जिसे हम महंगाई कहते हैं, this is a reality. If you want to earn post-tax returns that beat inflation, the only asset class to invest in is equity. Secondly, you are living in a country like India where you hear about all these growth stories. Don't you want to be part of that growth? And that growth is going to come from the growth of equities. You're not investing in mutual funds. You're not investing in stocks. You're investing in businesses. You're investing in great Indian businesses and entrepreneurs that will grow as this great country and this booming economy will grow. So I think, equity in that sense is indispensable. Now, the myth that people have about equity is that it is all in. कि मैं या तो स्मॉल कैप करूंगा या कुछ नहीं करूंगा, जैसे हम यूपी में कहते हैं मैं तो रेल में हूं या जेल में हूं. The reality is not that. If you're a retired person, you can buy a balanced advantage fund that has 50 or 60% equity exposure and 40% debt exposure, so that you can manage your risk and get some upside. You can buy an equity savings fund that has 20% equity exposure and 80% debt exposure. If you are a young person who wants to take risk, of course you can buy a small cap fund. So the range of products today that is available is very vast, and that will help you manage your risk. So Radhika, just I think one last question, and then we're good. So tell us some book recommendations for our investors. Oh, book recommendations. So I'm going to give a plug instead of giving you book recommendations. I want you to go to our website and read book summaries. So you go to loismm.com. We have lots of book summaries of finance books. I know many investors will not admit this, but many of us don't have time to read a full book. But we love 6-page book summaries. So we have tons of book summaries on our website. There must be at least 50 summaries. I highly recommend you go read them. They're one of the most popular things we do. So I'm sure सिर्फ उन book summary से हमें बहुत सारी learnings मिल जाएंगी. बिल्कुल, बहुत सारी learnings मिलेंगी in 5-page format. Perfect, sure. Thank you so much, Radhika. I think we have learned a lot from you today, and I'm sure हमारे investors को बहुत अच्छा perspective मिला होगा. So thank you so much for your time, and I truly appreciate you giving us an opportunity to talk to you. So thank you so much. Thank you so much, and happy investing, guys. Thank you. Take care. Wow, what a wonderful and knowledgeable conversation with Miss Radhika. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure आप सबको इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. So quickly जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री एंड द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना इज शटिंग डाउन. तो इसका जो है इंडिया के ऊपर या इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा. तो राधिका सेज कि अगर देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी में एक ओएसिस की तरह है. चाइना में ऑफ कोर्स बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अभी भी चाइना इंडिया से 10 से 15 साल आगे है, विच मीन्स वी हैव अ लॉट टू कैच अप ऑन. लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया अभी एक स्वीट स्पॉट पर है. फिर हमने ये डिस्कस किया कि जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है इन द रीसेंट पास्ट एंड वाज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ह्यूज इनफ्लोज इन द लास्ट 6 months. लेकिन ऐसा भी टाइम आता है जब स्मॉल कैप फंड्स काफी अंडर परफॉर्म करते हैं ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन. तो मिस राधिका सेज कि जब भी हम स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा 1 साल का टाइम होराइजन नहीं होना चाहिए.
हमें कम से कम 7 से 10 साल के लिए स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर हमने मिस राधिका के साथ SIPs के बारे में डिस्कस किया है। राधिका सेज कि SIP एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स। SIPs आपके इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर देते हैं एंड आप बहुत छोटे अमाउंट से भी SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। शी ऑल्सो सेज कि आप SIPs किसी भी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, इसीलिए SIPs एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स। फिर हमने थोड़ा इंडेक्स फंड्स के बारे में बात करी एंड राधिका सेज कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो एक स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स माने जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप डेफिनेटली इंडेक्स फंड्स में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ समझनी चाहिए कि इंडेक्स फंड्स में भी उतना ही रिस्क होता है जितना किसी एक एक्टिवली मैनेज फंड में होता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि काफ़ी इन्वेस्टर्स इक्विटी फंड्स में सिर्फ रिटर्न्स को चेस करते हैं एंड दे गेट वेरी फियरफुल अबाउट लूजिंग मनी। तो राधिका सेज कि कभी भी इक्विटी फंड्स में सिर्फ 1 साल के रिटर्न्स को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 1 साल के रिटर्न्स आपके लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स के रिटर्न्स को डिफाइन नहीं करता है। कम टू लुक एट इट, इक्विटी फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक बहुत पर्सनल चॉइस होती है। इट डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जब वो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं तो क्या उनको सिर्फ ब्रॉड बेस्ड कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो राधिका सेज कि जो आपका कोर पोर्टफोलियो है विच इज 80% ऑफ योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, उसमें जो है आपको 5 से 6 ब्रॉड कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो शी रेकमेंड्स कि आपके कोर पोर्टफोलियो में आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डाल सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स। और आपका जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है उसमें आप सेक्टरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने क्वांट फंड्स के बारे में बात करी एंड राधिका सेज कि क्वांट जो है वो एक अलग कैटेगरी नहीं है म्यूचुअल फंड में, बल्कि इट्स अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। राधिका सेज की जो क्वांट स्ट्रैटेजी है वो पैसिव स्ट्रैटेजी नहीं है, वो एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग एन इक्विटी फंड। फिर हमने थोड़ा ये डिस्कस किया कि जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं, क्या उनको ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो राधिका सेज कि जो ELSS फंड्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को आपको विदाउट द टैक्स बेनिफिट्स इवेल्युएट करना चाहिए। ELSS फंड्स डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं एंड यू हैव टू वे द इम्पैक्ट ऑफ द 3-year लॉक-इन पीरियड बिफोर यू इन्वेस्ट योर मनी इन ELSS फंड्स। फिर हमने ये डिस्कस किया कि जो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं, क्या उनको ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो राधिका सेज कि जो ELSS फंड्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को आपको विदाउट द टैक्स बेनिफिट्स इवेल्युएट करना चाहिए। ELSS फंड्स आर लाइक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, और जब आप उनको इवेल्युएट करते हैं सो यू शुड वे द इम्पैक्ट ऑफ द 3-year लॉक-इन पीरियड बिफोर यू डिसाइड कि आपको ELSS फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि काफ़ी इन्वेस्टर्स इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो FDs या RDs में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इक्विटी फंड्स काफ़ी रिस्की होते हैं। तो राधिका सेज कि अगर आप आपको इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज दे हैव द पोटेंशियल टू बीट इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन, और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे अगर आपने इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया है। म्यूचुअल फंड्स में हर तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम अ वास्ट वेराइटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस। राधिका ऑल्सो सेज कि जब आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, और आप ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं विच आर रन बाय सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। सो दैट वाज अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। आई एम श्योर आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस एपिसोड में। प्लीज डू कीप वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, डू like this video, and please do subscribe to the Groww Mutual Fund channel, and thank you so much for watching.